Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to start our new chapter, that is chapter number 4, the cell. So let's move to the classboard. So dear students, chapter number 4. The cell. Very important and very basic chapter regarding biology. और जहाँ तक बात है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और इसके अलावा MCQs भी इसमें से शामिल हैं. और एज़ फार एज द एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू दिस चैप्टर इज़ इंक्लूडेड. ठीक है, सेल जो है इसमें इसके वाले से जितने भी हम ऑर्गेनल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे. सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, द सेल. बहुत ही बेसिक चैप्टर है और इसके जो बेसिस हैं, आपने फंडामेंटल बेसिस जो थी आपने ग्रेड 9 में भी पढ़ी थी, वहाँ पर भी ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था आपने. यहाँ पर भी चैप्टर नंबर 4 में हम इसी को डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंडेड वे के अंदर. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस चैप्टर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन द सेल इन विच ब्रांच इट इज स्टडीड. आपने चैप्टर नंबर 1 डिटेल से पढ़ा और उसमें आपने पढ़ा था सेल बायोलॉजी. सो दैट इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल. तो इसको हम कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं? सेल बायोलॉजी में. क्लियर? सो इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of cell, its organelles, and also how the cell divides, means cell division. So all these the structures or these things are being discussed in the cell biology. Clear? It's called cell biology. Dear students, cell जो है इसको it is considered as a structural and functional unit of life. जितने भी जानदार चीज़ें हैं वो जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जिससे मिलकर बनती हैं, जो स्ट्रक्चर का काम भी कर रहा होता है और फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा होता है, उसको हम सेल कहते हैं. सो इट इज़ द सेल is the structural means कि स्ट्रक्चर बनाएगा. ठीक है, and the functional यूनिट ऑफ लाइफ. यूनिट कहते हैं इकाई को, यानी जिस जो बेसिक सबसे स्मॉलेस्ट वो चीज़ जिससे मिलकर कोई भी चीज़ बनती है. सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ.
It is the smallest structure. It is the smallest structure in living organisms. ये सबसे छोटा स्ट्रक्चर है which can carry or which carries actually all life activities individually. यानी एक सेल वो तमाम जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म इंडिविजुअल लेवल पे को ऊपर कर रहा होता है, जो कि जिससे मिलकर के पूरी बॉडी जो है वो काम कर रही होती है. मीन्स कि इसमें रिप्रोडक्शन भी हो रही है, इसमें रेस्पिरेशन भी हो रही है, इसके अंदर डाइजेशन भी हो रही है, एवरीथिंग. ठीक है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है लिविंग थिंग्स का, जो कि अगर इंडिविजुअली देखें एक सिंगल सेल जो है तमाम एक्टिविटीज़ को वो कैरी कर रहा होता है. चैप्टर नंबर 1 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था कि वो जब हमने डिफ्रेंशिएट किया था लिविंग और नॉन लिविंग को एक दूसरे से, तो वहाँ पर भी यही बातें हुई थी. वो 7 से 8 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स थे, वो सारे के सारे एक सेल कर सकता है. क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से, शॉर्ट के एतबार से, एमसीक्यूज के एतबार से. Emergence and implication of cell theory. या फिर हम इसको एक और टाइटल भी दे सकते हैं इस टॉपिक को. आमतौर पर ये बोर्ड में इस तरह से भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सेल थ्योरी. कि सेल थ्योरी का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिखें, उसमें हम जितने भी जिस साइंटिस्ट ने जो कंट्रीब्यूशन इसमें पे किया वो सारा का सारा इसमें शामिल किया जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, कहानी स्टार्ट होती है सेल की सेल डिस्कवरी से, कि सेल डिस्कवर कब हुआ और किसने किया. सो द पर्सन हु डिस्कवर्ड द सेल, that was Robert Hooke in 1665. He was the first person जिसने सेल को डिस्कवर किया था. तो डिस्कवरी ऑफ सेल से कहानी स्टार्ट होती है सेल थ्योरी की. So Robert Hooke in 1665, he actually discovered the cell. He discovered the cell and reported in his famous publication उसकी बहुत सारी पब्लिकेशंस थी, उनमें से एक बहुत फेमस रही, दैट इज माइक्रोग्राफिया. तो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली सेल जो है ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है. तो इसकी जो डिस्कवरी है वो रिलेटेड थी से जो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के साथ. सो फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो थी वो प्रिपेयर की गई थी हॉलैंड में बाय साइंटिस्ट नेम बाय द नेम ऑफ ज़कैरियस जेनिसन. उसने 1995 के अंदर पहली अपनी सेल्फ मेड एक ट्यूब माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट की थी. और उसी के बाद फिर लोगों का थोड़ा सा रुझान हुआ माइक्रोस्कोप्स की तरफ. तो तब जाकर जो है 1665 में रॉबर्ट हुक ने भी अपनी ही सेल्फ मेड जो है एक माइक्रोस्कोप जो है उसके अंडर ऑब्जर्व किया था थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क को.
और उसके अंदर फिर उसने देखा कि कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, एक ही जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं. सो लेट अस कंटिन्यू. ही ऑब्जर्व्ड thin slices of cork. कॉर्क का पता आपको स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 14 में भी इसका नाम आएगा. और ये बेसिकली प्लांट्स में हम पढ़ते हैं कि उसमें जो मेरिस्टेम होती है वो 3 तरह की होती है. एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम. जो लेटरल मेरिस्टेम है वो आगे फर्दर 2 तरह की होती है. उसमें वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम होती है. जो बाहर वाली साइड पे दरख्त की जो छाल होती है जिसको हम बार्क भी कहते हैं, वो बेसिकली बनती है कॉर्क टिश्यू से. वो काफ़ी सॉफ्ट होती है. तो कुछ ख़ास किस्म के दरख्त होते हैं जिनके उस कॉर्क टिश्यू से जो बनाए जाते हैं, वो शराब की जो बोतलें होती हैं उनके ऊपर जो कॉर्क रखी जाती है, ढक्कन, वो बनाए जाते थे. तो पुराने ज़मानों की बात है, चूँकि ये अंग्रेज़ हैं तो उन्होंने दे यूज़ टू ड्रिंक. ठीक है, तो उनकी जो सी वो बॉटल्स थी उनके ऊपर वो जो सा ढक्कन सा होता है उसे हम कहते हैं कॉर्क. सो वो कॉर्क जो किससे बनता था वो थोड़ा सॉफ्ट होता है. ठीक है, और वो बनता है प्लांट के जो कॉर्क कैम्बियम होते हैं उससे. तो चूंकि वो प्लांट मटेरियल है, प्लांट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उसने उस कॉर्क टिश्यू जो कॉर्क था उसके पास वो बोतल के ऊपर उसके बारीक बारीक स्लाइसिस किए और फिर उसको ऑब्जर्व किया अपने ही बनाई हुई माइक्रोस्कोप में. ही ऑब्जर्व्ड थिन स्लाइसिस ऑफ कॉर्क. सो व्हाट इज कॉर्क? दैट इज एक्चुअली डेड plant material. क्लियर? तो ये बेसिकली वो प्लांट मटेरियल है डेड. और वो मैंने आपको उसकी डिटेल बता दी कि जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है, 2 तरह की कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम. तो जो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर वाली साइड पे जो मौजूद है, आउटर रिंग जो होते हैं बनते हैं, वो कॉर्क कैम्बियम के बनते हैं, वहीं से इसको बनाया जाता है. थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर हिज self-made microscope. ठीक है, तो उसको ऑब्जर्व किया. तो उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी? व्हाट ही ऑब्जर्व्ड. So he observed that the cork has a honeycomb-like pattern जैसे शहद का छत्ता होता है, उसी तरह से उसी पैटर्न के ऊपर इसको स्ट्रक्चर नज़र आया. और उसमें क्या देखा उसने? ही कॉल्ड दीज यूनिट्स, उसमें जो उसको यूनिट्स नज़र आए, एज सेल. उनको उसने सेल का नाम दिया. क्लियर? और फिर उसने डिफाइन किया. ही कॉल्ड सेल एज एन एम्प्टी स्पेस bounded by thick walls. Clear? So if you look at the honeycomb structure, तो उसमें इसी तरह से आपको छोटे छोटे इस तरह से यूनिट्स नज़र आएंगे. दरमियान से वो एम्प्टी होते हैं और साइडों पे थिक वॉल्स हैं. सो इन्हीं को उसने नाम दिया सेल का, क्योंकि ये वाले जो स्ट्रक्चर था उसको नज़र आया
उसमें माइक्रोस्कोप में और ऑब्जर्व क्या करा था कॉर्क को, और कॉर्क क्या ये प्लांट टिश्यू है, डेड प्लांट टिश्यू. सो अकॉर्डिंग टू हिम, तो अगर हम इसमें से इसको ऑब्जर्व करें, सो इट वुड लुक लाइक दिस. एक को तो ये दरमियान में से एम्प्टी स्पेस और ये उसकी थिक वॉल्स. These are the thick, this is the thick wall and here is empty space. तो यहाँ से कहानी शुरू होती है फिर सेल थ्योरी की. बाय द डिस्कवरी ऑफ द सेल, तो दिस इज हाउ ही डिस्कवर्ड द सेल. क्लियर. उसके बाद इस अगली सदी में कोई ख़ास काम नहीं हुआ. फिर 19वीं सदी तक कोई ख़ास काम इस सेल के ऊपर नहीं हुआ. 19वीं सदी में उसके शुरू में फिर सेल के ऊपर बाकायदा तौर पर जो काम शुरू किया गया वो किया था 1805 के अंदर, इन 1805 बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट लॉरेंस ओकेन. सो इन 1805 there was a scientist by the name of Lawrence Ocken. He believed that all living beings, जितने भी जानदार हैं, all living beings originate from or consist of vesicles or cells. Vesicles or cells. So that was what he believed. और जो उसने आगे मज़ीद इससे पुराने जो काम थे रॉबर्ट हुक और उससे पहले जो कुछ काम हो चुका था उसको भी देखा, ऑब्जर्व किया. Clear? Now after that there was another scientist by the name of Jean-Baptiste de Lamarck. In 1809. So उसने क्या contribute किया? He contributed that nobody can have life. Nobody can have life if its constituent parts are not cellular tissue or composed of cellular tissue. That was what the Jean-Baptiste de Lamarck contribution, कि कोई भी चीज़ उस वक्त तक जानदार नहीं कहला सकती. Nobody can have a life if its constituent parts, यानी कि अगर उसके जो पार्ट्स हैं जिससे मिलकर वो बॉडी बनी है वो सेलुलर टिश्यूज़ ना हो. अगर वो सेलुलर टिश्यूज़ नहीं है तो वो लाइफ या लिविंग बॉडी नहीं है. नोबडी कैन हैव अ लाइफ, उसके अंदर जान नहीं हो सकती. या फिर इट इज़ नॉट कंपोज्ड ऑफ सेलुलर टिश्यूज़. नोबडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स are not cellular tissue or are not composed of cellular tissue. Not composed of cellular tissue.
उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं, यहाँ पर स्टार्ट होती है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इससे पहले कोई न्यूक्लियस का जो है वो जिक्र नहीं है। सो इन 1831, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, देयर वाज साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ रॉबर्ट ब्राउन in 1831. So he discovered the nucleus. तो यहां पर है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर? इसके ऊपर आप लिख सकते हैं, he discovered nucleus in the center of the cell. The center of the cell. So, upon the discovery of nucleus, the idea of Robert Hooke was changed. क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली सेल जो है दैट इज एन एम्प्टी स्पेस। ठीक है, यहां पर हमने बात की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एम्प्टी स्पेस है, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि सेल जो है वो एम्प्टी स्पेस नहीं है, बल्कि इसके अंदर मौजूद एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। सेल एज एन एम्प्टी स्पेस, ये आइडिया था जो कि रॉबर्ट हुक का था, जो चेंज हुआ 1831 में अपॉन द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद दो जर्मन बायोलॉजिस्ट और आए। सो इन देयर वाज अ नेम ऑफ थियोडोर शॉन in 1839. He was a zoologist and another German biologist by the name of Schleiden in 1838. He was a botanist और दोनों ही जर्मन है, याद रखिएगा, दोनों ही जर्मन है। ठीक है, सो इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली काम किया और दे केम टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेल थ्योरी। सो zoologist, the biologist who studies the animals, and botanist is the biologist who studies the plants. So both worked independently and came to the formulation of cell थ्योरी। इन्होंने सेल थ्योरी एक्चुअली प्रेजेंट की थी। क्लियर? जो हम पढ़ रहे हैं ये सारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। और स्टूडेंट्स दे वर द फर्स्ट जिन्होंने बताया कि जो सेल होता है वो 3 बेसिक पार्ट से मिलकर बना होता है। दे गिव द इंफॉर्मेशन that cell is made up of 3 basic parts that are nucleus, number 1, number 2, cytoplasm,
the fluid surrounding nucleus, and number 3, the plasma membrane. और सेल मेम्ब्रेन, जो कि इन सारी चीज़ों को बाहर से कवर कर रही है. सो ये फर्स्ट वो साइंटिस्ट हैं दोनों जिन्होंने बताया था कि सेल के ये 3 बेसिक पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस, द साइटोप्लाज्म एंड द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्लियर. उसके बाद फिर डियर स्टूडेंट्स, इन 1855 देयर वाज अनदर साइंटिस्ट by the name of Rudolf Virchow. In 1855, सो रुडोल्फ विर्को ने बताया कि जितने भी नए सेल होते हैं, जो न्यूली फॉर्म्ड सेल होते हैं, they only arise by the division of the pre-existing cells. He said that all new cells are formed by the division of the pre-existing cells. क्लियर. चूंकि ये जर्मन था, ये भी जर्मन साइंटिस्ट है स्टूडेंट्स, तो इसने अपनी जर्मन लैंग्वेज में जो इसने कहा वो दैट वाज omnis cellula e cellula. क्लियर. कि इसका अगर हम इसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, सो इट मीन्स द ऑल न्यू सेल्स, जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन इन द प्री एग्जिस्टिंग सेल. जो पहले से मौजूद सेल होंगे वही डिवाइड होंगे तो उन्हीं से नए सेल बनेंगे. सो दैट वाज व्हाट ही कॉन्ट्रीब्यूटेड. उसके बाद एक और साइंटिस्ट, और वो अपने हर वक्त में फेमस रहा, और इसका नाम आप पहले भी बहुत दफ़ा सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और आप इंग्लिश के लिटरेचर में भी इसका नाम पढ़ेंगे, अपनी जो कोर्स बुक्स हैं उनके अंदर भी पढ़ेंगे. दैट वाज लुइस पास्चर. लुइस पास्चर in 1862 he experimentally proved the idea of Rudolf Virchow. क्योंकि he was working because Louis Pasteur in those days he was working on bacteria, और जो फर्मेंटेशन वाले जो प्रोसेसेस हैं उसके ऊपर वो काम कर रहा था. उसने क्या देखा कि एक बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड होता है, उसी से नए बैक्टीरिया बन रहे होते हैं. ठीक है. He observed the cell division in bacteria and came to know that new bacterial cells are formed by the division of pre-existing bacteria. क्लियर.
तो एक्सपेरिमेंटली उसने प्रूफ कर दिया था कि वाकई रुडोल्फ विर्को की जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है। जब रुडोल्फ विर्को ने जो स्टेटमेंट दी थी ओमिनस सेलुला ई सेलुला, तो यहाँ पर इससे पहले एक ये जहन में एक बात थी लोगों के, साइंटिस्ट के भी, कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो खुद ब खुद ही बन जाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से। उसे क्या वो आइडिया कहलाता था, या उसको उस थ्योरी को कहा जाता था, या उसको कॉन्सेप्ट को कहा जाता था द ए बायोजेनेसिस, द थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस का मतलब है कि जो नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुद ब खुद ही स्पॉन्टेनियसली बन जाते हैं फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, ए बायोजेनेसिस। ठीक है। सो जब रुडोल्फ विर्को ने ये प्रूफ किया और उसने ये ऑब्जर्वेशन अपने सामने की, तो वो जो सा आइडिया था इनका ए बायोजेनेसिस वाला, वो भी चेंज हो गया। ठीक है। और उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया लुईस पास्चर ने। सो और भी बात जो है वो फिर क्लैरिफाई हो गई। सो स्टूडेंट, देयर वाज अनदर साइंटिस्ट आफ्टर द लुईस पास्चर। उन्होंने 1862 के अंदर जो अपना वो एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ है उसको पेश किया था। और उसके बाद फिर देयर वाज अनदर जर्मन साइंटिस्ट by the name of August Weizmann in 1880। उन्होंने भी अपना एक contribution पेश किया था related to the cell theory that all presently cells, living cells, have a common origin because there are similarities in structures of cells and molecules. Okay. So that was what he said कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं स्टूडेंट्स, उनका ओरिजिन जो है वो कॉमन है। तो ये एक आइडिया था, और उस आइडिया के पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि चूँकि जितने भी उस वक्त तक 1880s तक जितने भी सेल्स जो हैं उनको स्टडी किया जा चुका था, तो उनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स थे वो बेसिक थे, और बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलैरिटीज़ मौजूद थी। मतलब तमाम सेल्स जो हैं लिविंग सेल, उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन शामिल है, ऑल ऑफ देम। सब के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद है, सब के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है सिवाय प्रोकैरियोट्स के। ठीक है। तो खैर वो प्रोकैरियोट्स वाला चक्कर तो वो बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का डिफरेंस। लेकिन ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर थे यानी कि जेनेटिक मटेरियल उन सब के अंदर मौजूद था, और कुछ ऐसे और भी इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ थी अमंग वेरियस सेल्स जो कि कॉमन थी, जैसे कि प्लांट्स में और एल्गी के अंदर, और इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म थे जो फोटोसिंथेटिक थे उनके अंदर क्लोरोफिल कम होना, इसी तरह से जो लाइजोसोम्स, इसी तरह से और बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, इस चैप्टर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे उनको। सो इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ थी। और फिर उसके अलावा उनके मॉलिक्यूल्स के ऊपर, मॉलिक्यूल्स में भी, यानी मॉलिक्यूलर लेवल में चाहे, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आगे चल के हम पढ़ेंगे, उसकी कंपोजिशन में, जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, जो ऑर्गेनल्स की सेल मेम्ब्रेन्स हैं, उनकी कंपोजिशन में, जैसे दे आर मेड ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑफ द ऑर्गेनल्स, दे आर मेड ऑफ लाइपोप्रोटीन्स, जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, दैट इज मेड ऑफ लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड द कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। तो उसमें फिर जो लिपिड्स हैं वो भी तब सबके अंदर तकरीबन एक जैसे ही हैं, जैसे फास्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल, सिवाय बैक्टीरिया के, वो भी बाद में जाकर पता चला। लेकिन इस वक्त तक तो यही था कि इनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं, और उनके अंदर मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं। उसके बाद फिर प्रेजेंट जो की गई थी आपसे, जिसका जिक्र हुआ, जो हमारा बेसिक टॉपिक था, दैट वाज द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के कुछ सेलेंट फीचर्स हैं, 3 उसके सेलेंट फीचर्स हैं जो कि डिस्कस किए गए थे। ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी?
salient features of cell theory. जो शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट है उससे इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। वैसे तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से ये वाला पोर्शन जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेल थ्योरी प्रेजेंट किसने की डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं इसी लेक्चर के अंदर दैट द सेल थ्योरी was presented by Theodore Schwann that was a German zoologist and Schleiden was a German botanist in 1838 and his year was 1839. क्लियर। तो इन दोनों ने प्रेजेंट की थी, ये आपने याद रखना है। और उसके फीचर्स के नंबर 1, cell is the structural and functional unit of all living organisms or life. Clear? So that was the first, and another salient feature, that is all cells arise by the division of pre-existing cells. So ये वाला आइडिया किसने प्रेजेंट किया था डियर स्टूडेंट्स? That was presented by Rudolf Virchow in 1855. And the third one is the living organisms are composed of one or more cells. So one cell वाले कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं? द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल मौजूद होते हैं उनको हम मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्लियर। सो दिस वाज दैट वाज द आइडिया ऑफ सेल थ्योरी और उसके जो फीचर्स हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि जो सेल की डिस्कवरी है और जो सेल थ्योरी है उसकी जो बेस है वो कहाँ पर बनती थी? ऑन द डिस्कवरी ऑफ द सेल। और उसमें डिफरेंट साइंटिस्ट का अपने कॉन्ट्रीब्यूशन भी देख लिया। लेकिन डिस्कवरी ऑफ सेल किसके ऊपर बेस कर रही थी? वो थी ऑन द माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर एक हमारे इसी टॉपिक के अंदर एक बड़ा सा येलो बॉक्स दिया गया जिसमें माइक्रोस्कोप्स के वाले से इंफॉर्मेशन दी गई है। और इसमें दो चीज़ें पहले तो आप समझ लें, दैट इज़ पहले तो हम इसमें एक डेफिनेशन को करेंगे, माइक्रोस्कोपी, दैट इज द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप, इट इज द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप, उसको माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। और इससे पहले हम देखते हैं दो डेफिनेशंस हैं जो कि माइक्रोस्कोप्स के हवाले से इस्तेमाल होती हैं। एक है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है इंक्रीज इन द apparent size
ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के अपेरेंट साइज को, बज़ाहिरी साइज को बड़ा करके देखना, दैट इज टर्म्ड एज मैग्निफिकेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय एक्स। इसको हम एक्स यानी टाइम्स, जितने गुना बड़ा करके जितने टाइम्स हम इसको इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ एक्स लगता है। एक्स की जगह जैसे कि हम 500x यानी 500 गुना बड़ा 500 टाइम्स इसको बड़ा करके देख रहे हैं, 10 टाइम्स अगर कर रहे हैं तो 10x लिखेंगे उसके। ये दिस एक्स का मतलब है टाइम्स, क्लियर। तो ये इसके लिए ये टर्म होती है, इसको डिनोट किया जाता है मैग्निफिकेशन को। इसी तरह से एक और टर्म है जो कि माइक्रोस्कोपी में इस्तेमाल होगी, दैट इज रेजोल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, रेजोल्यूशन it is the clarity of an image। आप किसी चीज को बड़ा करके देख रहे हैं, मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, लेकिन क्या उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स थे वो आपको वैसे दिख भी रहे हैं कि नहीं। लेट्स सपोज कि अगर आप एक हेयर है उसके स्ट्रक्चर को बड़ा करके देख रहे हैं, तो आप जूम करते जा रहे हैं, मैग्नीफाई करते जा रहे हैं और अल्टीमेटली आपको पता चले उसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो वो वहाँ पर जब कुछ नज़र नहीं आएगा, आपको क्लैरिटी नहीं हो रही होगी चीज़ों की, मीन्स कि उसकी रेजोल्यूशन वहाँ पर काम नहीं कर रही। तो रेजोल्यूशन का मतलब यही है कि आप किसी भी चीज़ को जब मैग्नीफाई करें तो उसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्कुल क्लियर रहें। सो दैट इज़ द रेजोल्यूशन विच इज़ द टर्म विच इज़ यूज्ड इन द माइक्रोस्कोपी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी चीज़ को डिटेल के साथ देखेंगे कि वो डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स जो हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, हमारी ह्यूमन आई उसकी मैग्निफिकेशन कितनी है और वो किस तरह से आगे चलकर काम करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट ड्यूरेशंस के अंदर मुख्तलिफ तरह की अपनी राय जो थी और उन्हीं की बेस के ऊपर जो है वो प्रमोट की गई थी, प्रपोज की गई थी द सेल थ्योरी। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे कुछ माइक्रोस्कोप्स के हवाले से। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।